morning students, I hope you all are fine and studying well at home. Now see, today we will start chapter number 3, atoms and molecules. So we have done a lot of things in Zoom session, but now let's see for video. Atom, A-tom. A means no, un. Tom means cut. The substance which cannot be cut further. Dalton said that atom is the smallest substance which cannot be broken down further. But later on we got to know that there are almost 35 subatomic particles. How many subatomic particles? 35. And out of these 35, 3 are well known. Electron, proton and neutron. Fine. So if I write O, O2, O2 negative. Here O is atom, O2 is molecule, O2 negative is ion. So are you able to understand the difference between these three terms? Molecule is a substance, pure substance which consists of atoms. There may be same kind of atoms or different kind of atoms. If it is elemental molecule, then same types. If it is the molecule of compound, then different types. Alright. So O2, here oxygen gas, this is ozone, this is phosphorus. See, here I am writing O2, here O3, here P4. एक molecule में जितने number of atoms होते हैं, that is called atomicity. If I say O2, how many atoms are here? 2. So this is diatomic. If I say sodium, how many atoms are here? 1. Then this is monoatomic. If I say ozone, triatomic, because 3 are there. If I say 4, P4, tetraatomic. Polyatomic, if it is more than 4. For example, sulfur 8. 8 atoms are there in the molecule of sulfur. If I say hydrogen atom, then you will write H. But if I say hydrogen gas, then you will write H2. If I say oxygen atom, then you will write O. But if I say oxygen gas, then you will write O2. Fine. Atomic hydrogen and gaseous hydrogen, the symbol is different. Similarly, nitrogen N, nitrogen gas N2. See, when atom will be there, then you have to write the mass of nitrogen is what? 14. But if I say nitrogen gas, then you have to write 28. Very good. If oxygen atom, then 16 gram per mole. If I say O2, then 32. If H2, then 2. If H, then 1. Okay. Ions. Here I was writing negative. Ions are formed either by the loss of electron or by the gain of electrons. If it is by the loss, if electron is lost, for example sodium, electronic configuration is 2881, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. देखिए 11 थे पॉजिटिव और 11 थे नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. फाइन. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 10. 10 minus 10 plus 11. So answer is plus 1. So here it is plus 1. If chlorine takes one electron, then there will be Cl negative. So ions are of two types. If positive charge, then cation. If negative charge, then anion. Similarly, as molecules were there, monatomic, di, tri, tetra, poly. Similarly, ions are also of these many kinds. Monoionic, diionic, triionic, tetraionic, polyionic. So if I say Cl negative, only one atom is there, one ion is there, so this is mono. O2, there are 2, so this is di. Nitrate ion, NO3, there are 4. PO4, phosphate, -3. So here it is poly. See, I'll let you know. Here I am saying chloride, 8. So these suffix, how do they come? If I say ammonia, अमोनिया ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बना अमोनियम. क्या बना? अमोनियम. इयम. पॉजिटिव चार्ज के पीछे जो सुफिक्स आता है, सुफिक्स यू नो, जो आप हिंदी व्याकरण में बोलते प्रत्यय, जो पीछे लगता है, इयम. और नेगेटिव चार्ज में सुफिक्स आता है आइड, 8 पर
8. Fine. Ide, 8 per 8 depends upon the oxidation number, like how many oxygen or how many electronegative elements are there in that particular species. लेवोजियर एंड जॉन डेल्टन हुए जिन्होंने बहुत वर्क किया इस पे. हमारे महर्षि हुए थे कनाड, उन्होंने भी वर्क किया था 600 BC, देखो कितने सालों पहले. But he didn't explain very much about it, he just left it like this only. But then Lavoisier and John Dalton worked upon it and they gave some laws of chemical combinations. And under those chemical combinations, here we will be reading 3 only in our syllabus. In our syllabus there are 2 only, but 3 is just the intermixing of these only. Law of conservation of mass. What is conservation? आप देखते हैं conservation of soil. Fine. How can you avoid soil erosion? So conservation means like conservation of energy. Means as it is. Loss ना होने देना. Mass can neither be created nor be destroyed. इसके basis पे ये बना. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be changed some other form. तो conservation of mass इसी के basis पे बना. ये कहता है कि अगर आप कोई रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा. फाइन. लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. द मास ऑफ कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, 16 3s are 48. So here it is 100 gram. So the mass of calcium carbonate is 100 gram. If I heat it, then it will be disintegrated into 2 parts, calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide is what? 40 plus 16, that is 56. So if I say that this reaction is under the accordance of law of conservation of mass, then please let me know what will be the mass of CO2. Come on. If it is 100, this is 56, then it will be 44 gram. Fine. Or you may measure it like, see, you may calculate it. Carbon is what? 12. Oxygen is what? 32. 12 plus 32 is what? 44 gram. So this is called law of conservation of mass. Number 2. Law of constant proportion. Constant proportion और definite proportion is the same thing. ये कहता है कि अगर आप लेते हैं water molecule, क्या लेते हैं? Water molecule. Water molecule में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का मास यहाँ कितना है बेटे? 2 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम. तो अगर मैं रेशियो लूं तो दिस रेशियो विल बी 1:8. ये कहता है आप ये वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी लें, चाहे आप गंदे नाले से लें, आप नदी से लें, समंदर, आपके घर पे वाटर प्यूरिफायर, आप वहां से वाटर मॉलिक्यूल लें, आप रेन वाटर लें, ड्रेन वाटर लें, रिवर सी, आई मीन एनी काइंड ऑफ वाटर आप लें. अब आप कहेंगे कि मैम उस वाटर में तो इम्प्योरिटीज हैं. इम्प्योरिटीज है, बट दोज इम्प्योरिटीज का जो केमिकल फॉर्मूला दैट इज सेपरेट. वाटर के लिए तो बेटा सिर्फ H2O ही है. फाइन. सो इन H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप बाय मास देखते हैं, so here it is 2:16, that is 1:8 ratio, irrespective of any source of that particular sample. Similarly, one more example is there, carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas. आप इस रूम की कार्बन डाइऑक्साइड लें, आप किसी और एरिया की कार्बन डाइऑक्साइड लें, आप किसी चिमनी के ऊपर के कार्बन डाइऑक्साइड लें, या आप कहीं के भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, तो आप देखेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड oxygen, here carbon is 12 gram and oxygen is 32 gram. So here the ratio will be 3:8, irrespective of any source of carbon dioxide gas. Then law of reciprocal. Law of reciprocal क्या कहता है? कहता है कि आपके पास कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है किसी रेशियो में. कार्बन और हाइड्रोजन ने सपोज कंपाउंड बनाया CH4. ए एलिमेंट ने कंपाउंड बनाया बी एलिमेंट के साथ, बी एलिमेंट ने कंपाउंड बनाया सी एलिमेंट के साथ, हियर सी इज ऑक्सीजन. H और O में कंपाउंड जो बना दैट इज H2O, दैट इज H2O. तो देखिए आप CH4 का इधर रेशियो देखिए, कार्बन इज व्हाट 12. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट. मोल. देखिए हियर विल बी यूजिंग मेनी डिफरेंट टर्म्स. फर्स्टली यू मे फील कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, but once you know the basics of these things, so these will not be so confusing. AMU, atomic mass unit.
कि अगर हमारे पास एक वाटरमेलन है, तरबूज है, तो उसके हम 12 हिस्से कर लें, 12 पार्ट्स, और सारे बच्चों को एक एक हिस्सा दे, और ये 12 हिस्से जो 12 हिस्से हमने किए हैं ये बहुत ही इक्वल हों हर तरह से, फाइन। तो उसको मैं एक मान लो एक यूनिट, अब मेरे पास जितने भी वाटरमेलन्स आए उस यूनिट को मैं उससे कंपेयर करते चलूँ कि देखो जितना मैंने उस दिन आपको एक वाटरमेलन का पीस दिया था ये उतना ही है, तो उससे एक स्टैंडर्ड करके चलना। तो स्टैंडर्ड हमने माना था कार्बन 12। देखिए 12 मैंने यहाँ क्यों लिखा है, बिकॉज कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, these 3 types of carbons are found which are called the isotopes of carbon. Isotopes, I'll let you know. Once one of you was asking in Zoom session, ma'am, what is the meaning of isotope? Then I explained isotope, isobar and many. Like isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. See here I have written its mass number 12. So mass number can be 12, 13 or 14 of carbon. Atomic mass unit एक unit होती है which is equal to exactly the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्सा जो होता है that is called 1 atomic mass unit. तो अगर मैं इसकी 12 atomic mass unit, तो कार्बन 12 का मास क्या हो जाएगा 12U. U is unit here. Then molecular mass, for example I am giving you a molecule of methane gas CH4. अब मैं बोलूँ कि इसका मास बताइए आप, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एटम का मास क्या है, एंड देन यू विल सम अप. सो कार्बन, द मास ऑफ कार्बन इज व्हाट 12 यूनिट, हाइड्रोजन इज व्हाट 1 हाइड्रोजन इज 1, सो 4 हाइड्रोजन इज व्हाट 4 यूनिट, सो 12 + 4 इज इक्वल टू 16 यूनिट्स. एमिडो एवोगैड्रो जी आए, एमिडो एवोगैड्रो, हालांकि हम बात, इन्होंने कांस्टेंट दिया था जिस कांस्टेंट को हम Na के नाम से जानते हैं, नंबर है ये कुछ एटॉमिक. इन्होंने बोला था कि जो आप C12 की बात कर रहे हैं 12 ग्राम, सी हियर आई एम यूजिंग द टर्म ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms, 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules, or any particle whatever you ask is present in C12, that will be the number, this one. This is a constant number and this constant was given by Amido Avogadro. Now you might be thinking, मैम इससे पहले तो बोल रहे थे एक एटम है, अभी अचानक से इतने ज्यादा एटम्स कैसे आए? वो जो हम बात कर रहे थे बेटे वो U की कर रहे थे. U में जितना दिखाई दे रहा है आपको उतना ही एटम होता है. ग्राम में, एक मोल के ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 into 10 to the power 23. तो 12 यूनिट ऑफ कार्बन मोल होता है इसमें, that is 1 mole, that is 1 mole, and mass of 1 mole is called molar mass. Mass of 1 mole is called molar mass. और 1 mole में होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. 1 mole में क्या होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. If I give you a question, calculate the number of atoms present in 52 gram of helium. Second part है 52U of helium. तो देखिए बेटा U में आपको जो दिखाई देता है वही एटम है. ग्राम में हर मोल के, मोलर मास के ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होता है. अब मैं यहाँ 52 ग्राम ऑफ हीलियम लेती हूँ. यू नो द मास ऑफ हीलियम इज व्हाट 4 ग्राम. तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. Avogadro number of atoms. Then 1 gram will consist of Avogadro number upon 4 atoms. And how many we have asked? 52. So 4, 13 4s are 52. 13 into 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. Or you can say 13 Avogadro number of atoms. 13 Avogadro number of atoms. यानी 13 into 6.022 into 10 raised to the power 23. जब 50U की बात होती है U, तो आप जानते हैं 4U of helium. आपको हीलियम में कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? Only one atom is there. In 1 unit there will be 1/4. But question is 52 unit. So here it will be 13 atoms only. How many atoms? 13. So if I ask, calculate the number of moles in 46 gram of sodium. देखिए ग्राम, आपको पता है सोडियम का मास क्या होता है 23. तो 23 of 1 सोडियम एटम क्या होता है 1 मोल.
1 ग्राम में क्या होगा 1/23 ग्राम मोल. And the question is asked for 46. So how many moles will be there in 46 gram of sodium? 1/23 into 46. So here it will be 2 moles. तो 46 ग्राम पूछा हुआ था और 23 आपको पता है मोलर. सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. फाइन. और आपको पता है कि अगर मैं मोलर नंबर ऑफ मोल्स एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा फिर देखिए अगर मुझे यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. फाइन. अब मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स भी है और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हैं. देखिए अब अगर मैं ये बोलूं कि 1 मोल ऑफ एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ सोडियम consists of 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. Fine. So how many atoms will be there in 3 moles? तो आपने क्या किया एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. फाइन. एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 क्या है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर इस तरह से पूछा हो कि नंबर ऑफ मोल्स में इतने नंबर ऑफ मोल्स में एटम्स क्या होंगे तो आप सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लो. नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट होता है W अपॉन M गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो. तो दैट विल बी नंबर ऑफ atoms present in that particular substance. You go through these videos, read the chapter twice or thrice, do question answers and then take your doubts in Zoom session. All right? So how many atoms will be there in 3 moles? तो आपने क्या किया एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. फाइन. एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 क्या है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर इस तरह से पूछा हो कि नंबर ऑफ मोल्स में इतने नंबर ऑफ मोल्स में एटम्स क्या होंगे तो आप सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लो. नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट होता है W upon M given mass upon molar mass into Avogadro. So that will be number of atoms present in that particular substance. You go through these videos, read the chapter twice or thrice, do question answers and then take your doubts in Zoom session. All right?